फोकस करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। कंपनी के नंबर्स आए हैं और अगर स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो इन लाइन विद एस्टिमेट्स हैं। रेवेन्यू इज अप ऑलमोस्ट 66%, एबिटा इज अप 43.5%, मार्जिन भी 11.9% आया है। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन थोड़े से ज्यादा थे, बट आई गेस इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स थे। पैट इज अप 67%. Highest ever quarterly standalone revenue for auto and farm segments देखी गई है. That's the big highlight of this quarter. Of course, auto delivered highest ever quarterly SUV and pickup volumes also. और आपने देखा है कि launch of all new Scorpio N, which is seen 25,000 bookings within 1 minute. ये भी एक बड़ा milestone है that we have to factor in. Highest ever quarterly sales of Trio in the electric vehicle three-wheeler segment also. तो बहुत कुछ है इस बार जो देखा गया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग रोबस्ट परफॉर्मेंस। आगे ये कंटिन्यू होगी कि नहीं, डिमांड ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, चलते हैं। कंपनी के सीएफओ, ग्रुप सीएफओ इस वक्त हमारे साथ मिस्टर मनोज भट्ट जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड टू सी यू एंड लवली टू हैव यू ऑन द शो। पहले तो सर नंबर्स एज आई सेड हैज बीन इन लाइन विद द एस्टिमेट्स। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली स्टैंडअलोन रेवेन्यू ऑटो और फार्म सेगमेंट्स के लिए, which is pretty impressive. बहुत सारे और achievements भी हुए हैं, तो क्या factors थे that have led to good performance like this? So, Swati, thank you for having me on the show. तो अगर क्वार्टर को देखा जाए तो पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक जो हमारे प्रोडक्ट्स है और उनका जो ट्रैक्शन है मार्केट प्लेस में, सो वो काफी स्ट्रॉन्ग है. So if you look at most of our products, they are doing extremely well. Be it the Thar, be it the 700, अभी जो Scorpio and जो response मिली है आपने बताया था, that's also very very good. So from a lot of perspectives, it's the demand which is very very strong on the auto side. अगर farm को देखा जाए तो जो हमने Q4 में weakness देखी थी, that has also gone away. I think we are seeing a revival. It was a very strong volume growth. In terms of revenue, I think that's the highest ever in terms of the farm revenue. So a lot of good things. Demand side पे जो recovery देखी गई है वो काफी strong रही है. The other factor is जो हम देख रहे हैं कि जो waiting periods है हमारे products के लिए, इसके बावजूद जो है bookings are running fairly high. तो इससे हम comfort लेते हैं कि जो डिमांड है वो हमारे प्रोडक्ट्स के लिए डिस्पाइट दैट है, तो दे आर फाइंडिंग रियली गुड सपोर्ट फ्रॉम द कस्टमर्स. तो दैट्स द ब्रॉड स्पेक्ट्रम. अगर मैं ब्रॉडली ग्रुप के बारे में बात करूं तो हमारी सारी ग्रुप कंपनीज ने भी काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म की है. सो लॉट ऑफ फैक्टर्स गोइंग वेल इन दिस क्वार्टर. Okay, brilliant demand, strong performance, of course, drive कर रही है. So operating margins slightly less than street estimates, 12.3%. क्या ये बढ़ेंगे आगे? किस तरीके का ट्रेजेक्ट्री है मार्जिन्स को लेकर? कॉस्ट कंट्रोल, फर्दर प्राइस हाइक्स पर क्या भी? तो मार्जिन्स पे अगर देखा जाए तो दो तीन चीजें हैं. तो पहले तो जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज हुई थी, तो ऑलमोस्ट टिल अप्रैल में हमने देखी थी कि ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस वन वे मूवमेंट इन प्राइसेस थी, जो हम कस्टमर्स को पास बैक कर नहीं पाए हैं. तो उसके वजह से जो मार्जिन प्रेशर है वो थोड़ा है, कंटिन्यू हो रहा है कंपेयर टू इवन लास्ट ईयर. एंड एज वी लुक फॉरवर्ड, आई थिंक कमोडिटी प्राइसेस लुक at this point they are lower than where they were, पर ये बहुत volatile है. तो दूसरी चीज है कि जो नए मॉडल्स है हमारे जिससे अब वॉल्यूम आ रही है, वो जनरली स्पीकिंग लोअर मार्जिन होती है कंपेयर टू ओल्डर मॉडल्स. तो जैसे जैसे वो मॉडल्स थोड़ी देर और मार्केट में रहेंगे, there'll be margin levers. हमने ब्रॉडली बोला था कि about 2 quarters back थोड़ा सा 300 बिप्स का इंक्रीज होगा मार्जिन में. दैट इज आवर गोल. एंड अभी जो हम देख रहे हैं जो सिचुएशन है, गिवन एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग, मार्जिन जो है जो सेकंड हाफ में इंप्रूव होगी, ये हमारी उम्मीद है. ओके, सेकंड हाफ में मार्जिन्स इंप्रूव होगी. सर प्राइस हाइक्स आ सकते हैं सेकंड हाफ में? प्राइस हाइक तो हम कंटिन्यूअसली ले रहे हैं ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स. जो आई थिंक जो तो हम depending on the demand cycle, depending on customer sentiment, we will try to pass it back over a period of time. But जो sudden spurts हुई है commodity prices में, we have not passed all of it back.
so far. Okay. Sir, आपकी रिलीज में प्रोग्रेस ऑन योर गोल्स एंड ऑन आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ग्रोथ आर ऑन ट्रैक कहा है, तो 18% आरओई का जो आपका एक प्लान है दैट्स इंटैक्ट, थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे उस पर? तो अगर देखा जाए तो अभी ऑलमोस्ट 4th क्वार्टर इन अ रो 18% आरओई के आसपास हम है। तो इन अ लॉट ऑफ वेज जो अर्ली जो हमने डिसीजंस ली थी ऑन कैपिटल एलोकेशन, उससे जो इम्प्रूवमेंट्स हुई है that is showing up in the numbers. दूसरा तो मैंने जो डिस्क्राइब किया था, जो सर्ज इन डिमांड, जो हमारे प्रोडक्ट्स जो है, जो अच्छा कस्टमर रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके वजह से ऑल्सो द ROE is 18%. तो हमारे हिसाब से we will try to manage it. I think the focus is now on growth because हमने दो चीजें बोली थी, 18% ROE and 15 to 20% EPS growth. So we are already at 18% ROE almost, give or take, although it might vary quarter on quarter. But looks like the big impetus now is how do we grow the businesses, because we feel कि जो demand cycle है वो अभी भी काफी strong है across segments, not just auto and farm. Demand cycle strong across segments. Quickly, sir, launch, and I think, of course, the big highlight has been your constant launches और उनकी जबरदस्त success. Scorpio N का of course हमने देखा response जबरदस्त रहा, outstanding. अब next big launch के लिए क्या तैयारी है, sir? What is the launch pipeline, especially in SUV for the rest of FY23? जो पहले the first thing which will happen is in the month of August itself, 15th August को जो हम EV unveil कर रहे हैं, EV strategy वो हमारी है, तो UK में अब event है ऑक्सफोर्डशायर में, तो वहाँ पर हम बताएंगे कि हमारे EV plans क्या है और हमारे जो SUV models जो EV में आने वाले हैं over the next few years, उन पे हम discussion करेंगे. उसके बाद हमने बोला था कि जो सितंबर टाइम फ्रेम में अराउंड दैट हम अपना पहला EV अनवेल करेंगे, which is the 400 XUV 400, एंड उसकी जो उम्मीद है कि जो Q4 Q1 तक डिलीवरीज भी स्टार्ट हो जाएंगी. So our EV journey will start. So that's the first thing in this year if you really look at it. जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे जो BII ने हमारे साथ पार्टनरशिप भी की थी EV स्पेस में. So that journey begins in this year and then it will continue over the next several years. Sir, the British international investment जो commit कर रहे हैं आपके $250 billion in your new EV company at a valuation of $9.1 billion that we know. क्या further updates है sir उसमें, and are we looking at further investments in that? The way we had spoken about it कि जो उसमें है जो पहला ट्रांच है BII और हमने क्रिएट करेंगे EV को, and we had also said that over a period of time हम like-minded investors ढूंढेंगे इस EV journey के लिए, because it's a long journey and we will continue to invest in EVs. So at this point I think it's just not even a month old, so there's not much to report in terms of progress. But over a period of time during the course of this year, we will definitely try and set up the company and the journey gets going. Okay. Very quickly, sir, आपसे जानना चाहूंगी recent rural development में what do you feel about the demand in the farm equipment segment, sir? So on the farm equipment side, I think first of all the market is wide and dispersed. It is unorganized and a very small portion is organized. जो छोटे कंपनीज है, जो MSMEs है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, उसी से डोमिनेटेड है. जो हम देख रहे हैं कि जो हमने जैसे एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो कोड है, which is मल्टीपर्पस फार्म इक्विपमेंट, उसके लिए तो हम काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड साइकिल देख रहे हैं. हमारी जो एस्पिरेशन है, हमने बोला था कि ये दिस इज अ सेगमेंट जो हम ग्रो करना चाहते हैं. आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक ऑन दैट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक this is a multi-year journey because जो unorganized से organized market बनाने की जो कोशिश है हमारी, उसमें काफी साल लग जाएंगे, but it remains an area of very very high growth for us. All right, sir. Lovely to have you and thank you so much for your time. Good luck. Thank you so much, Swati. Thank you.